बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 3 की साइंस स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 43, यूनिट नंबर 7 is here. The topic we are going to discuss is stages of water cycle. यानी जो वाटर का साइकिल होता है, पूरा पानी का एक साइकिल होता है, उसके हमने आज स्टेजेस देखने हैं, डिफरेंट स्टेजेस, किस तरह ये होता है और किस तरह हम इसको कह सकते हैं कि वाटर साइकिल आपका बनता है. सो एज आई हैव डिस्कस इन द अर्लियर लेक्चर, देयर वर 4 stages of water cycle: evaporation, condensation, precipitation and runoff, or you may say that collection. So you can see on your screen, this is the water cycle as cloud formation, precipitation, all these are the different steps of water cycle. So if we discuss about the main steps, like we can say what is evaporation, or what is condensation, or precipitation, or may say runoff. So there is a detail between that. First of all, if we discuss about evaporation, so evaporation is when the water is heated and is turned from a liquid into a gas. We call this water vapor. Because gases are lighter than air, the water vaporized to the sky. पहला प्रोसेस हमने भी डिस्कस किया अबाउट वेपोरेशन. वेपोरेशन क्या होता है? बुखारात बनते हैं किसी चीज़ का ओरिजिन. सो वेपोरेशन इज व्हेन द वाटर इज हीटेड एंड इज टर्न फ्रॉम अ लिक्विड इनटू अ गैस. किसी लिक्विड से उसका गैस में चेंज हो जाना. सेकेंड थिंग इज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या है? Condensation is when cold air cools the gas and it changes into a liquid. When the gas, water vapors, has turned into the liquid, it forms clouds. Clouds are made up of teeny water droplets. So we have discussed about condensation. So what condensation is? It is when cold air cools the gas, okay, and it is turned into a liquid. जब कोई air जो है cold air किसी भी गैस को ठंडा कर देती है और किस में चेंज हो जाती है, डेट इज चेंजेस इनटू लिक्विड. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन एंड यू कैन से क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ द टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. थर्ड, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेसिपिटेशन. Precipitation क्या है? Precipitation is when the liquid in the sky falls to the ground. This happens because the tiny drops of water join together to form the bigger drops. When they became too heavy to stay in the air, they fall off on the earth as a rain. So you can see in the previous slide, here is the process of precipitation, where liquid water in the sky fall to the ground. पानी आप देख रहे हैं गिर रहा है. द क्लाउड फॉर्मेशन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेनिंग. ऊपर से जो है क्लाउड फॉर्मेशन है एंड द वाटर इज ड्रॉपिंग आउट एंड इज गोइंग इनटू द लेक्स, रिवर्स, ओशंस एंड यू कैन से थ्रू सो मैनी प्लेसेस. एंड द लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट रन ऑफ. ओके, पानी का बह जाना. रन ऑफ इज व्हेन द रेन दैट हैज फॉलन टू अर्थ रन्स डाउनहिल एंड बैक इनटू द लेक और द ओशन. सो रन ऑफ, द लास्ट स्टेप ऑफ दिस इज रन ऑफ. क्या होता है? उसका लास्ट जो है बह जाना. ओके, सो व्हेन द रेन दैट हैज फॉलन टू द अर्थ runs downhill and back into the lake or the ocean, then this process happens. So then the overall cycle start and all over again. क्या होता है? पूरा जो तरीकाकार है हमारा इसका इन प्रोसेसेस से होता हुआ आगे जाके कंप्लीट होता है. That is completed after passing through following steps as I have discussed about evaporation, condensation, precipitation and runoff. All these steps are important steps of water cycle. So we have now important question answers of this chapter. Here is question number 3 that we are going to discuss. Question number 3 is here: how much part of earth is covered with water? Okay, as you know, water is an important essential component of life. There is no life without water. Can you survive without water? No, you can't survive. So there is a large quantity of water on the earth. About 3/4 of the earth is covered with water. We can say कि 3 जो है चौथाई कह सकते हैं, 3/4 earth is covered with water. What is evaporation? हाँ जी, evaporation क्या है? That is your question. As I have discussed earlier, the overall process of water cycle. We discussed in detail what is evaporation. So evaporation was that when water is heated and is turned from a liquid into a gas. This process is called evaporation.
जब पानी को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं और वो एक लिक्विड में, तो फिर लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. सो ओवरऑल दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल another cycle starts. So the evaporation is basic step we can say, but water is heated and it is turned from a liquid into the gas. This process is called evaporation. So here is question number 5. When rain falls on earth, बारिश जो है वो ज़मीन पर कब गिरती है? As you know, there is a cycle. When the cycle completes, raining starts. So here the answer you are watching is that when the drops of water become too heavy to stay in the air, they fall on the earth as rain. So this is the simplest answer, as you can say कि जब पानी के जो कतरे हैं वो क्लाउड्स के अंदर हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, तो then they start falling. So we can say when the drops of water become too heavy to stay in the air, they fall on the earth as rain. जो वो ज़मीन पर गिरना शुरू कर देते हैं in the form of rain, बारिश. Okay students, lecture ends here. We will meet with a new topic and a new lecture. Stay home. Allah Hafiz.